Good morning, all dear students. Myself Deepika Dhanwani, and I am heartily welcome to all 12th standard students of Fidel Institute and Genius School of Commerce. Today's chapter number first we are taking. We have completed the chapter number 5th, e-communication, in which we discussed the briefly what is the meaning of e-communication, e-tendering, e-auctions, e-governance, RTGS, etc. Now today we are taking the chapter number first of your textbook. The name of chapter is bank correspondence. I think you are familiar with the word correspondence. Correspondence, the basic meaning of, in you can say in Hindi, the correspondence means patra vyavhar. When we are trying to communicate or transit our message through with the help of letters is known correspondence. Got it? Here the topic of bank correspondence totally is surrounded to the bank, means बैंक के साथ जो हम letter writing करके communicate करते हैं. Got it? Here's one first point is mentioned here. The point to be kept in mind while corresponding with bank. जब भी हम बैंक से कोई पत्र लिख करके लेटर राइटिंग लिख करके कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए. एंड दैट इज नाउ प्रैक्टिकली वी आर most of the time we are using the letter writing, or we are submitting the applications for requesting the bank for providing please issue the ATM card, please issue the new passbook, please issue the checkbook, such kind of the transactions we are just familiar with such words. Now so there must be a certain points which should be considered to each and every when they are writing letters to the bank. First, any communication with bank should be done in a simple style, precise language and prescribed format. Definitely your letter writing is style is simple and precise language, बहुत ही अच्छी और सभ्य भाषा होनी चाहिए. And then prescribed format, जो भी format है letter writing का, उसे follow करना चाहिए. If you are remembered that I taught in 11th class, there is the topic of various kind of letter writing. Mainly today's the fully blocked letter writing is following, in which all the means name of requester, the person to whom we are writing the letter, all are mentioned on the right side. The second, secrecy should be maintained. हमेशा secrecy maintain होनी चाहिए, because that is the matter of our money. That's why that's every letter writing when we are using with the help of we are communicating to the bank, the secrecy should be maintained. Third, the account number and the type of account, means saving or current account, should be clearly mentioned. If you are the account holder of such bank, you don't have a need to write your name. Your account number is sufficient to give the information to the bank. And the type of account means you are the saving account holder or the current account holder, it should be clearly mentioned. Date must be written in letter. Obviously, if we are writing any letter and application in our practical life, date must be there. Amount should be maintained in figure and words both. Always be used if you are using the banking services and you are depositing and withdrawing the amounts. There must be an amount in two, figure also and in words also. And the precision and the punctuality are highly needed. Precision means, you can say in Hindi word that shuddhata. Shuddhata means clearly, neatly. There not be any such kind of mistakes is to be conducted when writing of letter. And punctuality means the time foundations. If bank give that within 10 days you have to apply, so means you have the time foundation कि आपको 10 दिन के अंदर ही application डालनी है. Got it? The precision and the punctuality are highly needed when we are corresponding with bank. मतलब जब हम बैंक से letter के through व्यवहार कर रहे हैं. So there must be one question can arises that to the student, that what point should be kept in the mind when while corresponding with bank. So your answer is here. The second major topic which I took, list the type of request letter written to a bank.
जब बैंक को हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लेटर लिखते हैं, कितने टाइप्स के हैं, सैंपल्स फॉर एग्जांपल्स, लेटर रिटन टू ओपन अकाउंट, अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आप उनसे रिक्वेस्टिंग लेटर भेजेंगे। लेटर रिटन टू स्टॉप अ पेमेंट ऑफ चेक, किसी का पेमेंट ऑफ चेक आपको रुकवाना है, आप नहीं चाहते हैं कि बैंक को पेमेंट करे, तो आप उनसे रिक्वेस्टिंग फॉर्म में एक लेटर लिखेंगे। लेटर रिटन टू क्लोज एन अकाउंट, अकाउंट क्लोज करना है तो उसके लिए लिखेंगे। लेटर रिटन टू गेट एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटीज है जो आपको बैंक देता है, इन विच डिपॉजिटरी अमाउंट से हम एक्सीडिंग अमाउंट विड्रॉ करते हैं, जो बेसिकली आपको करंट अकाउंट पे दिया जाता है, नॉट ऑन सेविंग अकाउंट। लेटर रिटन टू ओपन अ डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट मींस फॉर दोज हु आर यूजिंग द ट्रांजैक्शंस इन शेयर मार्केट, जो शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। द लेटर रिटन टू गेट एजुकेशनल लोन, इफ यू आर सीकिंग फॉर द लोन फ्रॉम द बैंक, आपको एक रिक्वेस्टिंग लेटर ड्रॉप करना होगा। लेटर रिटन टू गेट अ लॉकर फैसिलिटीज, लॉकर फैसिलिटीज के लिए आपको एक रिक्वेस्टिंग लेटर डालना होगा। लेटर रिटन टू गेट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड फैसिलिटी मींस इफ यू वांट टू अवेल एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक, firstly the basic procedure for corresponding the bank, you have to write on a letter written to inform the loss of debit card, ATM card, credit card, debit card, ATM card अगर खो जाता है तो उस पे सर्विसेज बंद करने के लिए लेटर लिखा जाता है। लेटर रिटन टू गेट न्यू पासबुक और लॉस ऑफ ओल्ड पासबुक, न्यू पासबुक इशू कराना, ओल्ड पासबुक कैंसिल कराना, न्यू चेकबुक इशू कराना। The letter written to transfer account from a branch to another branch, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कराने के लिए। And the letter written to get loans, आपको किसी भी प्रकार का लोन चाहिए। So that all are the example of requesting letter. Means if we want to avail any kind of service from banks, we have to write or we must have to write the letter and submit it to the bank so that bank can easily proceed on such request. There are three questions are elementary questions are mentioned here. First, mention two functions of banks. The major two functions of banks are accepting deposits and providing finance. आपकी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और आपको लोन फाइनेंस अवेलेबल करवाना। सेकेंड, हु रेगुलेट द बैंक इन इंडिया, सारे बैंक्स में कौन रेगुलेट करता है इंडिया में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज इट इज अवर सेंट्रल बैंक। द थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट टू टाइप्स ऑफ अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू गेट सर्विस फ्रॉम द बैंक। Actually, there are the various types of accounts, but major two accounts are to be opened by each and every, in which saving account and current account are availed by the businessmen, and for the pensioners, for the regular income persons used to open the saving account. So major there are the two division of account, current account and saving account. Okay, thank you.